देखिए फ्रेंड्स किस तरह से अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले चाहिए सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट और एक चाहिए सोल्डरिंग आयरन की बिट। आप दूसरी बिट आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये यूज़ की है। मैंने इस बिट को इस टाइप से खोल लिया ताकि इसमें एलिमेंट फिक्स आ सके, क्योंकि एलिमेंट इसके अंदर लगेगा। टिन कनस्तर की मैंने इस टाइप से एक पत्ती काट ली है। इसका यूज़ आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक होल करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटा एक नट लगाना है। आप देख सकते हैं होल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक छोटा नट लगाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एलिमेंट को यहाँ पे मैं टाइटली बांध सकूँ इस बिट के साथ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक गैस लाइट का पाइप। इसके सारे औजार पाती मैंने यहाँ से निकाल दिए। तो देख सकते हैं आप मैं किस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स इस नट को यहाँ पे इस होल में लगाना है। ये वैसे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हमें थोड़ा कट लगाना पड़ेगा। जिस टाइप से मैं कट लगा रहा हूँ वीडियो में आप देखकर उस टाइप से कट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हैंडल के रूप में मैं पीवीसी पाइप के एक पीस का यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पे ये लोहे का पाइप है, इसमें 2 होल करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने मार्किंग कर दी है, लेकिन पीछे की साइड में भी होल करना है, दोनों साइड करना है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें वायर का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं पाइप के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फाइबर स्लीप का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हीट यानी कि हीट होने पर ये हमारे वायर को जलाएगा नहीं। ये वायर हैं, इनका ये इंसुलेशन है, हटेगा नहीं, यानी कि जलेंगे नहीं। अब यहाँ पे हमें होल करने हैं दोनों साइड। तो आप देख सकते हैं मैंने होल कर लिए हैं और यहाँ पे मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है, 2 वायर हैं, इनको आप कहीं पे भी कोई सा वायर कहीं पे भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं है इसमें। और फाइबर स्लिप इसके ऊपर मैं लगा दूंगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक कागज़ के टुकड़े का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो ये लोहे का पाइप हीट हो तो ये हमारे हैंडल को यानी कि पीवीसी पाइप को यहाँ पे पिघला नहीं, यानी कि हीट जो है हमारे पीवीसी पाइप तक नहीं पहुँचेगी। ये कागज़ है, हीट रजिस्टर का काम करेगा। तो हमारा सोल्डरिंग आयरन बन के रेडी हो चुका है। अब टेस्टिंग की बारी है, चलिए टेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस प्रकार ये अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि प्रॉपर हीट हो रहा है और सोल्डरिंग वायर को अच्छे से मेल्ट कर पा रहा है। चलिए मैं आपको एक LED बल्ब के ऊपर सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी सोल्डरिंग अच्छे से हो रही है, यानी कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से ये अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देना।